Good evening, students. Is the screen visible to you? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay. So let's continue. We were talking about the Laurentian type of climate. Okay. All right. So just last topic in this Laurentian type of climate, which is fishing in Laurentian type of climate. Okay. I've explained this before also. Fishing है यहाँ पे warm current meets cold current at around 50° north latitude primarily. Okay, and because of the mixing of warm current and cold current, extensive breeding of fishes is done. Okay. Uh, Now the only thing we need to understand here, slight difference between fishing which is carried out in North America and fishing which is carried out in Japan. Okay. Now, in North America, fishing is done around the island of Newfoundland. Okay. कहाँ पे fishing होती है? Fishing is done in Grand Banks of Newfoundland and in Asia. Fishing is done in Japan, in the Japanese fishing islands. Okay. So in Grand Banks of Newfoundland and in Japan. Okay. In North America, the fishing which is done on the eastern coastline of Canada around 50° north latitude, the thing which we have to understand is the nature of fishing in this part of the world is more commercial. The commercial angle is big here, and which is essentially meaning that यहाँ पे जो fishing है उसमें export का angle ज़्यादा आता है. Domestic consumption definitely है, लेकिन primarily the purpose of fishing is doing exports. When we come to Japan, fishing is more of a necessity. Fishing is more of a necessity and primarily done for domestic consumption. Now, as we already know, Japan जो है वो it is an island which is formed as a result of subduction of Pacific Ocean plate under Eurasian plate, and because of that what happened is these are volcanoes. Japanese islands are volcanic islands, and volcanic islands are essentially not suitable for agricultural production. Okay, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम है और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे cultivated crops का production कम है, and because of that livestock farming भी कम है. Livestock farming, which is animal farming. So the population of cattle, which is cows and buffaloes, including goats, sheep, is lesser in Japan, and because of scarcity of agricultural produce,
as well as the land-based meat products, what happens is the dependency on sea is higher. Okay, the dependency on sea is higher. Sea based food items पे dependency ज़्यादा है और इसी की वजह से the fishing is carried out more because of necessity, and नॉर्थ अमेरिका में कमर्शियल एंगल ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स के लिए फिशिंग होती है. दिस इज पॉइंट नंबर 1. Now, point number 2 in North America is that deep sea fishing is not there. डीप सी फिशिंग मतलब डीप सी में क्या होता है कि सील्स एंड वॉलरसेस को जो कैच करते हैं, एंड इवन वेल्स, सील्स, वॉलरसेस एंड वेल्स, इनका फिशिंग कम है. डीप सी फिशिंग नहीं करते क्योंकि शैलो सी फिशिंग इज इनफ फॉर सफाइजिंग द एक्सपोर्ट बेस्ड नीड. तो इसलिए डीप सी फिशिंग में इतना ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका वेंचर नहीं करता, एंड स्पेसिफिकली कैनेडा does not venture much into deep sea fishing. On the other hand, when we speak about Japan, तो यहाँ पे deep sea fishing is higher. Okay, so जो seals और walruses और whales का जो fishing है उस पे भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जाता है. Okay, deep sea fishing जापान में ज़्यादा होती है और यही deep sea fishing नॉर्थ अमेरिका में कम है. ओके, when we talk about Newfoundland, they are largest fishing banks in the world in terms of geographical area. इनका geographical area बहुत बड़ा है और इसकी वजह से ये वर्ल्ड के largest fishing ground है based on geographical area. But when we come to Japan, it is largest in terms of production. वर्ल्ड का 18% प्रोडक्शन जो है फिशेस का वो जापान से ही आता है. वर्ल्ड का 18% फिशिंग प्रोडक्शन इज फ्रॉम जापान. सो नंबर 3 डिफरेंस एज वी राइट हियर इज लार्जेस्ट फिशिंग आइलैंड्स in terms of geographical area, right? And Japan is largest in terms of overall production. Production बहुत high है. So we are talking about 18% of world's production which comes from Japan. Okay, 18%, right? इसको लिख लीजिए. Let us write down this last paragraph on Laurentian type of climate. इसको आप बना लो पहले, कुछ पॉइंट्स यहाँ से लिख लो, then we will write and let me know when you are done writing from the screen. क्या क्या अभी हम लॉरेंशियन टाइप की बात कर रहे हैं, तो लॉरेंशियन टाइप में 2 रीजन्स है ना, उनको 2 को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और भी कंट्रीज में होता है, यूरोप में भी होता है. जब ब्रिटिश टाइप की बात करेंगे तो यूरोप की भी बात करेंगे. We are currently talking about Laurentian type of climate which is found on the eastern margins of the continents between latitudes of 45 degree north to 65 degree north. ठीक है कौशल?
जब ये आपका राइटिंग खत्म हो जाए स्क्रीन से, जस्ट लेट मी नो, आई विल डिक्टेट. प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए. North America and Asia, North America and Asia, within the latitudes of 45° north to 65° north, within the latitudes of 45° north to 65° north, are known for one of the largest fishing grounds in the world, primarily due to the mixing of warm and cold currents. Primarily in the world, primarily due to the mixing of warm and cold currents. Due to the mixing of warm and cold currents. Full stop. It is carried out in the Grand Banks of Newfoundland in Canada. It is carried out in the Grand Banks of Newfoundland in Canada. And on the Japanese coastline in Asia, with few fundamental differences between them. Full stop. In Canada, comma, the purpose of fishing is largely commercial. And the focus is more on exports. While domestic consumption is secondary. Full stop. In Japan, fishing is more of a necessity. Because
land-based agricultural production, because land-based agricultural production and associated livestock population, livestock, livestock, and associated livestock population is lesser. Associated livestock population is lesser. Associated livestock population is lesser. Full stop. As such, both agricultural crops and land-based meat availability, as such, both agricultural crops as well as land-based meat availability is lesser in Japan. The only option left is to look towards the sea. The only option left is to look towards the sea for ocean-based food production. For ocean-based food production. Ocean-based food production. Full stop. In North America, shallow sea fishing is carried out. In North America, shallow sea fishing is carried out. While in Japan, both shallow sea fishing and deep sea fishing are carried out. Both shallow sea fishing and deep sea fishing are carried out. Shallow, SHALLOW, shallow sea fishing and deep sea fishing are carried out. Full stop. In Japan, seals, walruses and whales are also caught. In Japan, seals, walruses and whales, spelling is on the board. मैं सर्कल कर रहा हूं उसको. Seals, walruses and whales
Fishing of seals, walruses and whales are also carried out where motorized trawlers, spelling is on the board, where motorized trawlers are used, motorized trawlers are used, equipped with high-tech navigational techno equipped with high-tech navigational accessories, high-tech navigational accessories to venture out into the deep sea, to venture out into the deep sea. To venture out into the deep sea. Full stop. Fish varieties such as halibut, spelling is on the board, halibut, hake, fish varieties such as halibut, hake, mackerel, salmon, halibut, hake, mackerel, salmon are caught and widely consumed in both North America and Asia, in both North America and Asia. Full stop. The Grand Banks of Newfoundland, the Grand Banks of Newfoundland are the largest fishing islands in the world. In terms of geographical area, whereas the Japanese fishing islands are the largest in terms of proportion of world's global production of fishes, in terms of production of global
production of fishes. In terms global world छोड़ दो global लिख लो खाली है ना. In terms of global production of fishes. In Japan, fishing is not only a way of food production. In Japan, fishing is not only the way of food production, but is also a culture, but is also a culture full stop. Not only they are consumed as food, but fish waste is also used as fertilizer for agricultural fields. Fish waste is also used as fertilizer for agricultural fields. Fish waste is also used as fertilizer for agricultural fields. Divers in Japan catch oysters. Divers in Japan catch oysters from the ocean floor. From which highly prized pearls are extracted. Highly prized pearls are extracted. Highly prized pearls are extracted. These are used for making ornaments. In Japan, fishes are eaten raw. Fishes are eaten raw, comma, fishes are eaten raw, comma, pickled
pickled, roasted, pickled, roasted, salted, pickled, roasted, salted, and canned for high domestic consumption. For high domestic consumption. Full stop. The aforesaid processes are also carried out. The aforesaid processes are also carried out in the Grand Banks of Newfoundland. In the Grand Banks of Newfoundland. But primarily for exports. But primarily for exports. But primarily for exports. But primarily for exports. Next, we will study about, so Laurentian type is over. We will study about taiga. जब नेचुरल वेजिटेशन हम पढ़ेंगे इस जोन में, जब हम दो और क्लाइमेट पढ़ लेंगे, मैं एक साथ नेचुरल वेजिटेशन डिस्कस करूंगा क्योंकि काफी सिमिलैरिटीज है, ठीक है। बट पहले उससे पहले टाइगा पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो टाइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये 45 टू 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में मिलता है। This climate is also called Siberian type. It is also called, I'm writing above, it is also called coniferous type. टाइगर का नाम साइबेरियन टाइप भी है और कॉनिफेरस टाइप भी है। अब कहां पे मिलता है ये? इट इज फाउंड वेस्ट ऑफ लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो अभी अभी हमने पढ़ा है, फाउंड वेस्ट ऑफ लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, and it is found east of British type of climate, east of British type of climate. It is found north of temperate grasslands,
and it is found south of tundra. इसको बना लीजिए. South of tundra. बन गया. East of British type, west of Laurentian type, north of temperate grasslands, and south of tundra. Basically, what we are talking about is ये आप जोन देख रहे हैं. यहां पर क्या है? ब्रिटिश टाइप बीटी. ब्रिटिश टाइप. तो यहां पर हमने जो देखा अभी, लॉरेंशियन टाइप एलटी इज लॉरेंशियन टाइप. इन दोनों के बीच में हमको क्या मिलता है? टाइगा. okay? ऐसे ही अगर हम एशिया में देखें तो ये जो हमारा जोन है, ये वाला, दिस इज द जोन. और इसमें से व्हाट वी आर टेकिंग ऑफ इज ये वाला साइड. तो यहाँ पे ईस्ट में लॉरेंशियन टाइप और यहाँ पे वेस्ट में ब्रिटिश टाइप. So essentially what we are speaking about is ये जो टाइगा बेल्ट है, it is only found in the northern hemisphere. क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में वैसे भी 45 डिग्री नॉर्थ के बाद ज्यादा लैंड मास है नहीं. और ये वो क्लाइमेटिक जोन है which is characterized by कॉन्टिनेंटलिटी, बिकॉज ये थोड़ा ओशन से दूर है. टेम्परेट ग्रासलैंड्स के नॉर्थ में है, लॉरेंशियन टाइप के वेस्ट में है और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के ईस्ट में.
कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्टिनेंटैलिटी। इस क्लाइमेटिक जोन में आपका ओशियनिक इन्फ्लुएंस मिनिमम है, ओशियनिक इन्फ्लुएंस मिनिमम है। और क्योंकि it is found between 45 degree north to 65 degree north. Summers are short. ये मिडिल लैटिट्यूड से भी ऊपर हो गया। एंड summers are short but winters are long. Right? Short से मतलब 3 to 4 months का समर होता है खाली, और वहीं पे 8 to 9 months का विंटर्स होता है। 8 to 9 months. Summers only for 3 to 4 months. Winters are 8 to 9 months. और क्योंकि इसका ओशियनिक इन्फ्लुएंस कम है, तो व्हाट वी मीन इज कि यहाँ पे रेनफॉल इज ऑल्सो लेस। रेनफॉल भी काफी कम है, ठीक है, अभी बात करेंगे। रेनफॉल भी कम है। और क्योंकि हम लोग मिडिल लैटिट्यूड से काफी नॉर्थ में हैं, तो सन का सिर्फ इनडायरेक्ट रेज ही मिलता है। तो जो विंटर्स लॉन्ग हैं वो फॉर एटलीस्ट 6 months, इन अ ईयर। 8 to 9 months का जो विंटर्स है उसमें एटलीस्ट 6 months ये स्नो कवर्ड रहता है। हमने देखा था टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, वहां भी स्नो पड़ती है विंटर्स के टाइम में। -5 -10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिलता है। यहाँ पे और ज्यादा कोल्ड हो जाता है क्योंकि टेम्परेट ग्रासलैंड से भी नॉर्थ में है। यहाँ पे -20 -25 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत नॉर्मल टेम्परेचर्स है। यहाँ पे -30 भी चला जाता है ड्यूरिंग विंटर्स, बिकॉज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, हम लोग जहाँ 50-55 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के करीबन आने लगते हैं, वहां पे हम लोग को काफी हार्श विंटर्स मिलते हैं। -25 डिग्री सेंटीग्रेड टू -30 डिग्री सेंटीग्रेड भी नॉर्मल है, राइट। समर्स छोटे हैं, 3 to 4 months, और ये वो पीरियड है टाइगर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन में जब स्नो कवर नहीं होता है। लेकिन स्नो कवर नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि गर्मी होगी। गर्मी तो हो नहीं सकती, यहाँ पे समर शॉर्ट है, प्लस इनडायरेक्ट रेज ऑफ द सन का बेल्ट है, लैटिट्यूडनली बहुत हाई है। तो यहाँ जो समर्स बोलते हैं वो 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर का जोन है। 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर अबव जीरो हो गया है, स्नो कवर नहीं मिलेगा, बट 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड काफी कंट्रीज के लिए एक विंटर वाला टेम्परेचर है, ठंडा टेम्परेचर। इनके लिए समर्स वही है, 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, बट विंटर्स बहुत हार्श है। तो अब देखिए, इसको हम भी बनाएंगे थोड़ी देर में, पहले समझ लेते हैं। तो जब हम समर्स की बात करते हैं टाइगा रीजन में, तो हम बात कर रहे हैं 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड की, और विंटर्स की हम बात कर रहे हैं जो आपका टेम्परेचर रेंज है -20 डिग्री सेंटीग्रेड से -30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका क्या मतलब है कि जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो भी काफी हाई है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे आपको 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में मिल जाता है। We know what is annual range of temperature. It is nothing but it is the difference of summer and winter temperatures. Difference of summer and winter temperatures. और कारण क्या है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इतना हाई मिलता है? उसका सिंपल सा कारण है कॉन्टिनेंटैलिटी, अवे फ्रॉम ओशियनिक इन्फ्लुएंस।
and this is that climatic zone which is found in the middle of the continent and in high latitudes. तो समर छोटे भी होंगे और सिर्फ कूल होंगे, वार्म नहीं होंगे, कूल होंगे. और विंटर्स जो हैं, विंटर्स आर हार्श. हार्श का मतलब हुआ विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, और जो समर्स हैं दे आर कूल, कूल समर्स. ठीक है, इसको इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसको भी नोट करें, इसको पहले नोट कर लो. जिसने कर लिया था वो ओके है, जिसने नहीं किया था उसको कर लीजिए, फिर आगे इसको भी नोट कर लीजिएगा, फिर हम कुछ लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ये जब हो जाए तो मुझे बताइएगा एक बार. Is it done? Okay. बोलो बोलो बोलो. लॉरेंशियन टाइप, लॉरेंशियन टाइप इसके ईस्ट में है. ब्रिटिश टाइप जो हम बाद में पढ़ेंगे वो इसके वेस्ट में है. दोनों कॉन्टिनेंट्स में, नॉर्थ अमेरिका में भी, एशिया में. इसको नोट डाउन कर लीजिए.
इसके नीचे लिखिए समर 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे विंटर्स -20 to -30 डिग्री सेंटीग्रेड, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लिया? इसके नीचे लिखिए, प्लीज राइट डाउन। Taiga type of climate. Taiga type of climate is found in the middle of the continents. Is found in the middle of the continents. Middle of the continents. In the northern hemisphere. In the middle of the continents. In northern hemisphere. Between 45 degree north to 65 degree north latitude. Between 45 degree north to 65 degree north latitude. Only in the northern hemisphere. Only in the northern hemisphere. Full stop. It is located. It is located west of Laurentian type of climate. West of Laurentian type of climate, comma, east of British type of climate. East of British type of climate, comma, south of tundra. South of tundra and north of temperate grasslands and north of temperate grasslands. North of temperate grasslands. Full stop. This zone is characterized by continentality. This zone is characterized by continentality. Due to which it is away from the oceanic influence. Due to which it is away from the oceanic influence. And hence
lesser annual rainfall and hence lesser annual rainfall and hence as lesser annual rainfall. Full stop. Due to its location beyond middle latitudes, due to its location beyond middle latitudes, beyond middle latitudes, comma, summers are short, summers are short, while summers are short, while winters are long. Summers are short, while winters are long. Winters are long. Full stop. Due to continentality, due to continentality, comma, higher annual range of temperature is found in taiga. Due to continentality, comma, higher annual range of temperature is found in taiga. With cool summers, with cool summers and extremely cold winters, with cool summers and extremely cold winters. Full stop. सी हमारा ये जोन है टाइगर का. In Canada, there is a town called Churchill, and this town is located just on the coastline of this water body you see. This is Hudson's Bay. In Asia, in Asia, the famous capital city of Moscow, capital of Russia, is located in the Taiga Belt. Moscow is located in the Taiga Belt. And this is that zone where कौन सा winds blow करता है? South, south, westerlies in both the continents. कौन सी winds हैं? It is the zone of south westerlies. अच्छा,
ये जो साउथ वेस्टर्लीज हैं ये बेसिकली आपके ब्लो करते हैं एसेंशियली 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, है ना? कहां से कहां तक? 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, राइट? लेकिन एक और विंड है जो 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ। चर्चिल कनाडा में एक सिटी है, हडसन्स बे के कोस्टलाइन। टाइगर रीजन है ना, पूरा बड़ा बेल्ट है। दो एग्जांपल लेके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इनको। ये टाइगर तो बहुत बड़ा बेल्ट है, वो मैंने ग्रीन कलर तो फुल टाइगर है। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो विंड्स हैं कौन सी हैं? साउथ वेस्टर्लीज। तो एसेंशियली 45 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में ब्लो करेंगी, राइट? और ये हमारा कंसर्न है भी क्योंकि वी आर डिस्कसिंग टाइगर, तो 45 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे तो साउथ वेस्टर्लीज हैं, लेकिन 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये जो इसका अपर पोर्शन है, यहां भी एक विंड सिस्टम है। ये कौन सी विंड्स हैं? हमने प्रेशर बेल्ट्स के डायग्राम में पढ़ा है। प्रेशर बेल्ट में पढ़ा है हमने, दीज आर पोलर ईस्टर्लीज। कौन सी हैं? पोलर ईस्टर्लीज, राइट? पोलर ईस्टर्लीज पोलर रीजन से आ रही हैं और साउथ वेस्टर्लीज जो है कहां से आ रही हैं? ट्रॉपिकल रीजन से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साउथ वेस्टर्लीज हैं दे आर वार्म, साउथ वेस्टर्लीज वार्म है, और पोलर ईस्टर्लीज क्या है? कोल्ड। सेम हियर, साउथ वेस्टर्लीज आर वार्म एंड पोलर ईस्टर्लीज आर कोल्ड। एंड दिस इज द बेल्ट। ये कौन सा बेल्ट है? ये वो जोन है which is the zone of convergence। किसका कन्वर्जेंस हो रहा है यहाँ पे? साउथ वेस्टर्लीज का और पोलर ईस्टर्लीज का। और ये वो जोन है जहां पे at 60 डिग्री नॉर्थ, at 60 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे क्या होता है? फ्रंटल रेनफॉल। Frontal rainfall as a result of convergence of south westerlies coming from the tropical region and polar easterlies coming from the polar region। Frontal rainfall होती है। लेकिन कहां पे? 60 डिग्री नॉर्थ में, मतलब अपर पोर्शन ऑफ टाइगर रीजन, वहां पे फ्रंटल रेनफॉल होती है। लेकिन ये जो हमारा 45 से 60 डिग्री नॉर्थ का बेल्ट है, यहां पे रेनफॉल कम होती है। ये रीजन में रेनफॉल कम होती है क्योंकि साउथ वेस्टर्ली से ब्लो करते रहते हैं, और ब्लो करते करते कन्वर्जेंस कहां पे हो रहा है? 60 डिग्री नॉर्थ में। तो 60 डिग्री नॉर्थ में रेनफॉल हो रही है ज्यादा, लेकिन जो मेजर पोर्शन है टाइगा बेल्ट का वो है तो साउथ वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में। लेकिन ये जो साउथ वेस्टर्लीज हैं एसेंशियली दे आर ब्लोइंग विद इन द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के विद इन है, और यहां ब्लो करते करते उनका मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हो जाता है। और दूसरा कारण ये भी है कि साउथ वेस्टर्ली जो आ रहे हैं वो कौन से जोन से आ रहे हैं? वो आ भी रहे हैं तो इस वाले जोन से आ रहे हैं ना, ये जो मैंने येलो से भी किया है हाईलाइट, ये वाला जोन। ये कौन सा जोन है? ये कोल्ड करंट का जोन है। एक तो कोल्ड करंट वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे, नंबर 1। दूसरा, by the time south westerlies reach the taiga region they become essentially moistureless। तो 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूडनल रेंज है जहां पे सिर्फ साउथ वेस्टर्लीज ब्लो कर रहे हैं, दे आर एसेंशियली ब्लोइंग मॉइस्चरलेस, मीनिंग दे आर ब्लोइंग ड्राई। 60 डिग्री नॉर्थ पे जाके जब वो पोलर ईस्टर्लीज से थोड़ा उनका जब कन्वर्जेंस होता है तब जाके फ्रंटल रेनफॉल होती है, और वो भी कम होती है।
फ्रंटल रेनफॉल भी कम है, लेकिन 60 डिग्री नॉर्थ तक तो वो भी रेनफॉल नहीं है। तो ये वो बेल्ट हैं हमारे बायोम्स के, ये वो बेल्ट हैं जो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय मिनिमम रेनफॉल, because southwesterlies are blowing within the continents. They are essentially dry with extremely less moisture, and moreover the southwesterlies are basically originating from western coastline. वेस्टर्न कोस्टलाइन वो नॉर्थ अमेरिका का हो, वहां भी कोल्ड करंट है, कोल्ड कैलिफोर्नियन करंट। और जब हम यूरोप की बात करते हैं तो वहां भी कोल्ड करंट है, कैनरीज करंट। तो कोल्ड करंट दोनों तरफ है। कोल्ड करंट मतलब लेसर इवेपोरेशन, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि इतना अंदर तक ब्लो कर रही है कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए टाइगर रीजन में 45 से 60 के बीच में कुछ भी रेनफॉल नहीं है। और जब ये कन्वर्जेंस होता है साउथ वेस्टर्लीज का 60 डिग्री नॉर्थ में, तो जो लोकल वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उनकी वजह से थोड़ा बहुत रेनफॉल यहाँ पे हो जाता है, उनकी वजह से थोड़ा बहुत रेनफॉल हो जाता है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है। अब ये रेनफॉल जो हम कम बोल रहे हैं, हम कितनी रेनफॉल की यहाँ एसेंशियली बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 40 to 50 centimeters of annual rainfall. बस that's it. 40 to 50 centimeters of annual rainfall. अब इसमें से भी nearly 50% is the share of snowfall. तो 50% शेयर ऑफ स्नोफॉल मतलब कि जो हमारा 6 मंथ्स का स्नो कवर्ड पीरियड रहता है, 6 मंथ्स का जो स्नो कवर्ड पीरियड है, उसमें जितना भी वाटर ऑब्टेन्ड है उसकी हम बात कर रहे हैं। और बाकी जो समर में है वो समर की रेनफॉल है। तो स्नो से पानी मिलता है, जब स्नो मेल्ट हो जाती है, जब विंटर्स के बाद वापस समर आती है उससे पानी मिलता है, राइट। और जो थोड़ा बहुत समर रेनफॉल होता है वो 3 to 4 मंथ्स के लिए होता है। अब ये जो कहानी है ये बेसिकली हमारा 45 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड की कहानी, ठीक है ना, 40 to 50 सेंटीमीटर्स। और अगर हम फ्रंटल रेनफॉल के रीजन की बात करें, मतलब 60 डिग्री नॉर्थ का जो जोन है, 60 to 65 डिग्री नॉर्थ का जो जोन है जहां पे फ्रंटल रेनफॉल हो रहा है, तो कन्वर्जेंस की वजह से यहाँ पे 50 to 60 सेंटीमीटर्स का एनुअल रेनफॉल मिल जाता है, क्योंकि कन्वर्जेंस की वजह से रेनफॉल थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन 45 to 60 डिग्री नॉर्थ में जहां पे साउथ वेस्टर्लीज आर एसेंशियली ब्लोइंग ड्राई, वहां पे जो हमारा एनुअल रेनफॉल है दैट इज ओनली 40 to 50 सेंटीमीटर्स। लो रेनफॉल एरियाज हैं, कॉन्टिनेंटलिटी है, लो रेनफॉल है। इसको यहाँ पे नोट करो, फिर आगे वाला नोट करो, उसके नीचे कुछ लिखेंगे। अब इसको भी बना लीजिए, इसको नहीं बनाया ना आपने अभी, बना लिया क्या? इसको बना लीजिए, साउथ वेस्टर्लीज दिखाइए और ऊपर पोलर ईस्टर्लीज दिखाइए। साउथ वेस्टर्लीज रेड कलर में मैंने बनाया, पोलर ईस्टर्लीज येलो कलर में। कौन सा वाला? एट 60 डिग्री नॉट फ्रंटल रेनफॉल,
कन्वर्जेंस हो रहा है ना साउथ वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज का, उसी को हम फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं। बन गया? को बना लो 45 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में 40 to 50 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल। और यहाँ पे आप ये भी लिख लेना बड़ा बड़ा, जोन ऑफ साउथ वेस्टर्लीज। Water obtained from snow melt. लिख लिया? हाँ बोलो, इसको लिख दो और यहाँ पे बोलो। बोलो। हम्म हम्म हम्म। तुमने ही तो कहा था नॉट, तुम्हारी फीलिंग ठीक है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस फीलिंग को थोड़ा सा एक्सपैंड करो। और वो इसलिए एक्सपैंड करो क्योंकि मेंस में जब आप आंसर लिखोगे ना, आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे डिक्टेशन के बिना। जो डिक्टेशन दे रहा हूं वो जरूरी है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, डिक्टेशन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, लिख लो इसके नीचे। इन द टाइगर बेल्ट, in the Tiger Belt, comma, in the Tiger Belt, southwesterlies blow between, southwesterlies blow between 45 degree north to 60 degree north, 45 degree north to 60 degree north latitude in both the continents, in both the continents,
and converge with polar easterlies converge with polar easterlies at 60° north latitude at 60° north latitude at 60° north latitude causing frontal rainfall full stop. Warm tropical air ascends over warm tropical air ascends over cold polar air ascends over cold polar air due to which condensation takes place due to which condensation takes place condensation takes place with the formation of horizontal clouds with the formation of horizontal clouds causing frontal rainfall full stop. In the latitudinal zone of 45° north to 60° north latitude, in the latitudinal zone of 45° north to 60° north, dry southwesterlies blow, causing only 40 to 50 centimeters of annual rainfall. 40 to 50 centimeters of annual rainfall. As they pick up moisture only from local water bodies. Full stop. In the latitudinal zone of 60° north to 65° north, in the latitudinal zone of 60° north to 65° north, slightly higher annual rainfall occurs
due to the convergence of tropical and polar winds. Due to the convergence of tropical and polar winds. Full stop. Also, 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 the zone of 60 to 65 degree north latitude is colder as compared to is colder as compared to the zone of as compared to the zone of 45 degree north to 60 degree north latitude as compared to 45 degree north to 60 degree north latitude. Full stop. Moscow in Russia and Churchill in Canada. Moscow in Russia and Churchill in Canada remain snow covered for at least 6 months in a year for at least 6 months in a year, comma, get only around 50 centimeters of annual rainfall, get only around 50 centimeters of annual rainfall with brief summers and long winters. With brief summers and long winters. Next, put the heading as coniferous trees. इसका जो natural vegetation है वो एक ही type का है और उसका नाम है coniferous trees. Have you heard about this tree? देखा आपने coniferous tree? हाँ, ये देखा आपने ये वाला, ऐसा वाला? यही है कॉनिफेरस ट्री. ठीक है, अब देखिए कॉनिफेरस ट्री की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, अच्छा आपने शेप देखी, शेप इट इज दिस ट्री इज pointed at the top, right, and it is broader at the bottom. ऐसा क्यों होता है? सिंपल कारण है कि this tree has adjusted to long period of snowfall. कैसे एडजस्ट किया कि शेप है कॉनिफेरस ट्री का, द शेप अलाउज फॉर स्नो टू स्लाइड डाउन, द शेप अलाउज फॉर स्नो टू स्लाइड डाउन एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, है कि नहीं?
अगर स्नो एक्यूमुलेट हो जाएगा टॉप सरफेस पे तो क्या होगा, ट्री डैमेज होगा। तो जो नॉर्मल ट्रीज हम लोग देखते हैं दूसरे क्लाइमेटिक जोन्स में वो कैसे हैं, ऐसा वाला, राइट। तो ये ऊपर से ब्रॉड होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला शेप का जो ट्री है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस आर ऑफ हार्श विंटर्स। हार्श विंटर्स मतलब इतना ज्यादा स्नो पड़ेगा तो ट्री भी विद अ पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसने कोनिकल शेप से एडजस्ट कर लिया, इसलिए इसका नाम है कॉनिफेरस ट्री। तो द शेप इज कोनिकल, ऐसा शेप है देखा जाए तो, राइट। तो स्नो डज नॉट एक्यूमुलेट एट द टॉप, स्नो डज नॉट एक्यूमुलेट एट द टॉप, सिंपल, राइट। स्नो ऊपर एक्यूमुलेट नहीं होता, नीचे स्लाइड डाउन हो जाता है। अब नंबर 2, कॉनिफेरस ट्रीज उन रीजन्स में सरवाइव करते हैं जहां पे रेनफॉल काफी कम है। कैसे सरवाइव करता है बिना रेनफॉल के? अब इसका कुछ कुछ सिमिलैरिटी है डेजर्ट वेजिटेशन के साथ, ठीक है। कॉनिफेरस ट्रीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर जनरली, बना लेना पहले समझ लो उसको, ठीक है। कॉनिफेरस ट्रीज आर एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब है कि लीफ स्टेज ऑन द ट्री for at least for at least 3 to 4 years। एवरग्रीन होते हैं, लीफ स्टेज ऑन द ट्री फॉर एटलीस्ट 3 to 4 years। और जो लीव्स होती हैं, लीव्स आर हार्ड, लीव्स आर needle shaped, लीव्स आर लेदरी, थिक होती हैं, लेदरी, या फिर आप लिख लीजिए थिक एंड लीव्स आर वैक्सी, थोड़ा सा चिकना टाइप होता है ऊपर से। हार्ड, नीडल शेप्ड, लेदरी या फिर थिक और वैक्सी। प्लस कॉनिफेरस ट्रीज के जो ट्रंक्स होते हैं वो होते हैं ब्रॉड। कॉनिफेरस ट्रीज हैव ब्रॉड ट्रंक्स। अब देखिए ये जो पूरा हमने अभी स्क्रीन पे लिखा है, एवरग्रीन है, लीव्स हार्ड होती हैं, निडल शेप्ड होती हैं, लेदरी होती हैं, थिक और वैक्सी होती हैं, प्लस जो ब्रॉड ट्रंक्स होती हैं, ये पूरा का पूरा जो अडेप्टेशन है कॉनिफेरस ट्रीज का वो उस जोन में है जहां पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर्स के अराउंड है, काफी कम रेनफॉल है। और समर्स भी कैसे होते हैं, समर्स भी 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे होते हैं, रेनफॉल भी ज्यादा नहीं होती है क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा नहीं है, समर्स कूल हैं और विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, तो रेनफॉल ज्यादा नहीं है। तो कम से कम मॉइस्चर कंटेंट वाली सॉइल में इन ट्रीज को सरवाइव करना है। तो कैसे सरवाइव करते हैं, दे डू नॉट लूज मॉइस्चर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीव्स बिकॉज लीव्स का भी अडेप्टेशन वैसे ही हो गया है, हार्ड लीव्स हैं। और ऐसी लीव्स हमारे डेजर्ट्स में भी मिलती हैं, जिन पेड़ों पे मिलती हैं वो ऐसी लीव्स मिलती हैं, हार्ड होती हैं, निडल शेप्ड होती हैं, थिक होती हैं, वैक्सी होती हैं। तो इन लीव्स के सरफेस से मॉइस्चर लॉस नहीं होता। और ये ट्रंक्स ब्रॉड का मतलब है कि ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, इट सर्वाइव्स आल्सो इन द लॉन्ग ड्राई पीरियड। तो ट्रंक्स में वाटर सेव करके रखता है, जब भी पॉसिबल होता है रूट से पानी को खींचता है और ट्रंक्स में सेव करके रखता है। और ट्रंक्स इसलिए ब्रॉड हैं, ट्रंक्स पानी को बचा के रखती हैं और लीफ के सरफेस से पानी लॉस भी नहीं होता, वाटर लॉस भी नहीं होता। इसलिए इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये लीव्स सरवाइव कर जाती हैं, ये पेड़ सरवाइव कर जाता है इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में जहां पे समर्स कूल हैं और विंटर्स एक्सट्रीमली कोल्ड हैं। अब देखिए ये, और ये जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं
इनका पूरे टाइगा में, टाइगा इज अ ह्यूज बायोम. In fact, what you have to remember is taiga is the largest biome of the world. Geographical area wise, taiga is the largest biome of the world. इससे बड़ा बायोम नहीं है. कारण बहुत सिंपल है. अगर आपसे क्वेश्चन आता है कारण के ऊपर, तो हमको बस यही लिखना है कि 45 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में कॉन्टिनेंट्स आर द ब्रॉडेस्ट, है कि नहीं. और अगर कॉन्टिनेंट्स आर ब्रॉडेस्ट तो क्या होगा, जो मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में बायोम होगा वो भी ब्रॉड होगा, उसका ज्योग्राफिकल एरिया काफी ज्यादा होगा. और नॉर्थ अमेरिका और एशिया प्लस यूरोप, तो ये तीनों रीजन्स को मिला के आपका टाइगा बनता है मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट में. और इस लैटिट्यूडनल जोन में इस लैटिट्यूडनल जोन में कॉन्टिनेंट्स आर ब्रॉडेस्ट, इसलिए टाइगा इज द largest biome of the world in terms of geographical area. ठीक है, इसको आप याद रखिए हमेशा. एक ही कारण है इसका, और वो है कि कॉन्टिनेंट्स आर ब्रॉडेस्ट. ठीक है. अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा जोन है, यहाँ पे हमको मिलते हैं कॉनिफेरस ट्रीज. ये जो कॉनिफेरस ट्रीज हैं, इनका पूरा फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है. और ये जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, दे आर सोर्सेज ऑफ सॉफ्टवुड. क्या मिलता है यहां से? सॉफ्ट वुड. मैंने आपको पढ़ाया था इक्वेटोरियल टाइप में, और ट्रॉपिकल मॉनसून में आगे पढ़ाऊंगा, जो एशिया का क्लाइमेट है, उसमें मिलती है हार्डवुड. हार्डवुड क्या होती है? हार्डवुड इज एसेंशियली यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है, शिप बिल्डिंग में यूज होता है, हेवी फर्नीचर में यूज होता है. लेकिन ये जो सॉफ्टवुड है, ये कहां पे यूज होता है? पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग में. इनसे वुड बेस्ड केमिकल्स भी निकालते हैं. ठीक है, पेपर, मैच बॉक्स, वुड बेस्ड केमिकल्स. लाइट फर्नीचर, जो हल्का फर्नीचर होता है, वहां पे यूज होता है. तो वर्ल्ड में अगर कोई बायोम है जो सॉफ्टवुड देता है, तो कौन सा बायोम है? टाइगा. और कहां से आता है सॉफ्टवुड? कॉनिफेरस ट्रीज से. कॉनिफेरस ट्रीज से सॉफ्टवुड आता है. और कॉनिफेरस ट्रीज आर ऑफ 4 टाइप्स. आपको वो 4 टाइप याद रखने हैं बस. पाइन्स, फिर्स, स्प्रूस, इनफैक्ट एक और मैं आपको लिखवाता हूं, लार्च, और आप एक और याद रखें, सीप्रेस. ये 5 पेड़ के नाम आपको याद रखने हैं. पाइन्स, फिर्स, स्प्रूस, लार्च एंड सीप्रेस. ये 5 टाइप के कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं. शेप में डिफरेंस होता है, लीफ के साइज में डिफरेंस होता है. ठीक है, ये सब आपने नोट कर लिया यहां से? ये नोटेड है? ये वाला नोटेड है? Yes, sir. ये वाला नोटेड है? एवरग्रीन, लीव्स आर हार्ड, नीडल शेप प्लस ब्रॉड ट्रंक्स. Yes, sir. वेरी गुड. इसको नोट कर लो. लिख लिया? Pines, firs, spruce, larch and cypress.
टाइगर रीजन में 5 टाइप के कॉनिफेरस ट्रीज मिलते हैं: पाइन्स, फिर, स्प्रूस, लार्च, सीप्रेस। इसके नीचे लिखिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसके नीचे लिखो कॉनिफेरस फॉरेस्ट dominates the taiga belt. Coniferous forest dominates the taiga belt full stop. Trees spread from east to west. Trees spread from east to west in a homogeneous manner. Trees spread from east to west in a homogeneous manner, comma, have adapted to harsh cold winters, have adapted to harsh cold winters in terms of shape, in terms of conical shape, comma, in terms of conical shape, comma, leaf characteristics, and broad trunk size, full stop. Due to unavailability of significant moisture, with prolonged period of winters, comma, the water loss from the surface of the leaves, is minimal, and broad trunks save water, for coldest period of winters, for coldest period of winters, full stop. These trees are essential supplies of softwood. Which is lighter, and suitable for paper manufacturing,
matchbox industry, and lightweight furniture manufacturing, including lightweight furniture manufacturing, including production of wood-based chemicals, including production of wood-based chemicals. Full stop. आगे लिखिए next paragraph. Lumbering, which is wood cutting. Lumbering, spelling is on the board, which is wood cutting, is the primary economic activity of taiga region. Primary economic activity of taiga region. Comma, carried out in winters. Carried out in winters. When आपने सैप का नाम सुना है? सैप, SAP. आपने वो देखा है ट्रीज में से थिक लिक्विड निकलता रहता है गर्मियों के टाइम पे, वो ट्रीज के ट्रंक्स को थोड़ा सा मॉइस्ट कर देता है. हाँ, गम की तरह. वेरी गुड. तो विंटर्स में क्या होता है, लंबरिंग इसलिए करते हैं, जो हम ये अब लिख रहे हैं ना, इज कैरीड आउट इन विंटर्स व्हेन, आगे लिख लीजिए, सैप ऑफ द ट्रीज ड्राइज आउट. लिखो इसको, सैप ऑफ द ट्रीज ड्राइज आउट. फुल स्टॉप. इट इज इजियर, आगे लिखिए, इट इज इजियर टू कट द ट्रंक्स. It is easier to cut the trunks with one stroke of the axe. It is easier to cut the trunks with one stroke of the axe. Full stop. Also, during winters, since the ground is snow covered, also during winters, since the ground is snow covered, since the ground is snow covered, comma, it is easier to assemble the wood logs. It is easier to assemble the wood logs. Spelling यहाँ देख लेना, wood logs, and transport it by wood logs and transport them by sliding on the ground. Summers are awaited for further transportation. Summers are awaited for
further transportation of wood logs through river or sea route. Further transport of wood logs through river or sea route. क्योंकि क्या होता है ना, हार्श विंटर्स में आपका रिवर भी जम जाती है और जो कोस्ट लाइन्स होती हैं ओशन की, सी की, वो भी जम जाती हैं, राइट, बिकॉज द टेम्परेचर इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वुड लॉग्स को विंटर्स में जब ट्रीज से काट लेते हैं, वुड लॉग्स को असेंबल करते हैं ग्राउंड पे, उनको स्लाइड करते हैं और स्लाइड करके रिवराइन कोस्टलाइन पे या सी या फिर ओशियन कोस्टलाइन पे लेके जाते हैं। समर्स का वेट करते हैं, जब स्नो मेल्ट कर जाती है, कोस्टलाइंस में वाटर वापस आ जाता है, तब उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं रिवर या सी रूट से, जहां भी जाना है ग्लोबली। तो इसलिए लंबरिंग जो है वो कब कैरी आउट करते हैं? विंटर्स में, ठीक है, क्योंकि कन्वीनियंस है कटिंग का भी, असेंबलेज का भी और ट्रांसपोर्टेशन का भी। ये पॉइंट क्लियर है? मैंने आपको इसलिए जल्दी लिखवा दी क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? दिस क्लियर, राइट, टू ऑल ऑफ यू? लंबरिंग, Yes, sir. गुड। Yes. अब देखिए इसमें एक लास्ट चीज, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? ट्रैपिंग। यहां पे ट्रैपिंग होती है, किसकी ट्रैपिंग होती है? कोई बताएगा? फर बेस्ड, सॉरी, फर बियरिंग एनिमल्स की। क्यों ट्रैप करते हैं फर बियरिंग एनिमल्स को? और ये काफी बड़ा एक्टिविटी है यहाँ पे। क्या करते हैं? दे एक्सट्रैक्ट फर बाय स्किनिंग द एनिमल्स। एनिमल को स्किन करते हैं, दे एक्सट्रैक्ट फर बाय स्किनिंग द एनिमल्स। और फर को कहां यूज करते हैं? कहां यूज करते हैं फर को? फर्स, वेरी गुड, फर्स आर यूज्ड फॉर jackets, in fact purses also, sweaters, very good। पता है तुमको, ये जो ट्रैपिंग होती है ना कनाडा में, रशिया में, इनसे जो फर निकलता है एनिमल से, वो सबसे कॉस्टलीस्ट फर है। और अगर आप कनाडा रशिया में जाएंगे ना, इवन विंटर्स में, आप लोगों को देखेंगे वो लोग क्या पहनते हैं, मोटी मोटी जैकेट पहनते हैं। वो जैकेट सबसे कॉस्टली है वर्ल्ड में, क्योंकि वो बनती हैं एनिमल के फर से। कैनेडियन जैकेट में 4 लेयर होती हैं, रशियन जैकेट में भी 4 लेयर होती हैं, आपको ठंड से बचाने के लिए। क्योंकि इंडिया में जैसा जैकेट पहनते हैं दिल्ली के विंटर्स में, हिमाचल के विंटर्स में, वो वहां पे काम नहीं आएगा। वहां पे कैसा जैकेट काम आता है, जिसमें मल्टीपल इंसुलेटिंग लेयर्स होती हैं, वो हीट को ब्लॉक कर देती हैं। तो ये कहां से बनती है? फर बियरिंग एनिमल से बनती है। तो ट्रैपिंग क्या करते हैं ये लोग? एनिमल्स को मारते नहीं है, ठीक है? ट्रैपिंग का मतलब इज नॉट हंटिंग, बट एनिमल्स को ट्रैप करके कैप्टिव स्टेट में ले जाते हैं। कैप्टिव मतलब उनको बंद कर देते हैं। बंद कर क्यों कर देते हैं? क्योंकि एनिमल्स को खिलाते पिलाते हैं अच्छे से, एनिमल्स को कैप्टिव बनाते हैं, मतलब बंदी बना लिया, खिलाते पिलाते हैं अच्छे से, वेट करते हैं एनिमल्स का, जब साइज बड़ा हो जाता है, उसके फर की थिकनेस मोटी हो जाती है, तो उस टाइम का वेट करते हैं, और जैसे ही उसकी फर की थिकनेस ज्यादा होती है, उसको स्किन कर देते हैं, और इस फर को वर्ल्ड के बड़े बड़े रीजन्स में एक्सपोर्ट किया जाता है। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, जितने भी बड़े बड़े मेट्रोज हैं, वहां पे सब आपको फर बेस्ड एनिमल्स की जैकेट्स मिलेंगी। कॉस्टलीस्ट ऑफ द जैकेट्स इन द वर्ल्ड विच आर फाउंड आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द फर ऑफ द एनिमल्स विच आर फाउंड इन टाइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट। ट्रैपिंग, लेकिन हंटिंग नहीं है ये, इट इज नॉट हंटिंग। आपको 2-3 एनिमल्स का, यस यस, इट इज लीगलाइज, नो प्रॉब्लम। सिल्वर फॉक्स, मिंक, it is legalized, definitely, no problem।
silver fox, mink, muskrat, beaver, raccoon. Can you remember these 5 names? What are they? They are fur-bearing animals. ठीक है? It is not killing of animals, it is just skinning animals whenever their fur matures, whenever it becomes thicker. ठीक है? इसको नोट कर लिया आपने? Yes, sir. ये नोटेड है? Yes, sir. Yes, sir. बस इसमें 2 लाइन लिखो, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा. प्लीज राइट डाउन. ठीक है? The best fur in the world comes from the best fur in the world comes from fur-bearing animals of taiga. Fur-bearing animals of taiga in Canada and Russia. In Canada and Russia. Full stop. The higher is the latitude. The higher is the latitude, comma. Thicker is the fur found. Thicker is the fur found on the skin of the animals. Thicker is the fur found on the skin of the animals. Full stop. The animals are made captive. The animals are made captive, comma. So the animals Are made captive. बंदी बना लेते हैं ना? Captive, comma. When the thickness of the fur is the highest, they are skinned. When the thickness of the fur is highest, they are skinned, comma. Thickness of the fur is highest, they are skinned, comma. Fur is exported to largest high latitude metropolitan centers. Fur is exported to largest high latitude metropolitan centers of the world. Largest high latitude metropolitan centers of the world. Where costly jackets, purses, etc. are manufactured. Costliest jackets, purses are. क्या हो गया? हाँ, आएगा खत्म. चल. Next class, British type of climate. चलिए, thank you, bye bye, good night. Thank you, sir.